2-3 आपको कोई जेनेरिक चीजें पता है कि कौन सी डायरेक्शन में क्या नहीं होना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं दूंगी. इट्स द प्योरेस्ट जोन, इट्स द मंदिर का एरिया. Do you think that some interior designers, I'm not talking about you, other interior designers that you know, they are overhyped and overpriced? अगर कोई 7 लाख का सोफा दे रहा है तो कोई खरीद भी तो रहा है ना. तो ओवर प्राइस ऐसा कुछ नहीं है. सब एलवी बन रहे हैं. कि बहुत सारे लोग, आपको लगता है ऐसा कोई काम इतना बोलता नहीं है, but they charge a lot. यहाँ करते हैं कभी कभी. Hi guys, I am Amanpreet Kaur And I'm Bhavika. and you're watching Boldmates. Guys, today we have a very special guest with us who is also a very close friend. She likes to call herself an interior designer and also a lifestyle designer. So, welcome to our podcast, Vidushi. Thank you guys. Thanks for Hi, having me Vidushi. here. Hi, Bhavika. So, what is actually an interior lifestyle designer? I feel your interiors is not only about how it looks, it's also about how you live in it. And with the years of practicing and also teaching to students, I've realized that aesthetics से बहुत ज़्यादा important होता है to choreograph between the way people are going to be using their space and how they're going to be interacting. Right. So I feel like there's another layer that I needed to add to my practice, which was that we need to know how we're gonna be waking up in the morning. Where will our cups be? Where will our medicines be when we're gonna go sleep at night? You know, and maybe just in the morning if you want to see the plants first, or maybe the TV first. So that is the kind of detailing thoughts that you need to give while you're designing your house. So I think it's all about personalizing your own experience. Right. Absolutely. Designing your lifestyle. You should Yeah. know what you want. How would you want to live your life? And you know, what would you want the first thing as an experience? Well, how would you like to have your experience? Sit on a cost chair or a soft chair? You want to feel comfy there or not comfy? Right. So those kind of things, those kind of detail layering is what I feel like should be added, and that's what I try to do. But I have a question for you. Your job, it looks very aesthetic. Yeah. It's all about aesthetics. हम यहाँ भी बैठे हैं तो of course ये किसी ने तो design किया होगा. Correct. So is it as glamorous behind the scenes? Not at all. या मतलब बहुत मुश्किल होता है. So can you just give us a little glimpse of as to how it is in day-to-day life? It's literally like I have a limited pair of good clothes, and I have all side clothes. They're all dirty and they're all scratched and they're basic. So basically all this glam needs a lot of hard work, coordination and dedication, and also I feel like passion. Then how does it feel after once you see the fruits of your labor Yeah. right in front of you serving Beautiful. Sometimes I'm sure. shocked that it didn't turn out the way we thought. Okay, so there are times when it does not come out. the way you Because thought. sometimes the clients are intervening too much with you, so it Okay. does go in haywire also, and maximum times it does turn out well. Now coming to the clients, now that you have addressed it, आपका ऐसा कोई client experience रहा है जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, it's not right, that's not how you're Amanpreet supposed to. is touching all the nerves at the beginning itself, like at the beginning of it. That's how we're Yes, supposed to of do course, it. of course it happens. Of course it happens. It Yes. happens. So do you have any personal experience? I mean, you don't have to take names, but you can share your experience with us. It's a safe space, Vidushi. Safe space. That's gonna go online. Uh, so I'll tell you one thing. I'm not trying to be diplomatic here or a politically correct person, but I feel like whatever it may be, I totally understand what I'm working with. I understand that I'm designing somebody's house. People are as is emotional about it. Their Right. weddings, their Of course, houses. of course. So I respect that. Yeah. But a lot of times, people just don't have the boundary. They will micromanage you. They would think that just bought you because they've paid you a fees. They Yeah. would not trust you even after looking for so many people and then still choosing you. They will be just so confused that they will not still trust you. And when the client is not trusting enough, that's where the problems start coming. When they try to bring in that non-trust relationship, I think that's one. And the other thing is micromanaging. Yes, clients sometimes think like we don't know what we are doing, but no, we know Does it- exactly what we need to do Right. and when we need to do it and when your site needs it. So our coordination, our planning is faster than your thinking.
So that's true. true. clients are difficult. They can be difficult. They can be emotional. But I'm that- very forgiving in that sense. Hmm. But I mean, that's your work. You will Hmm. have to. no, not have to. I can But choose that not to. anyway, that puts you in self-doubt sometimes. No, never. That's really nice. No, I'm You very have to factual. be That's sure good. about your work, na, Bhavna? I know, but then there are certain times when people, budge on you and they just don't let you work on what you have thought properly about. It's very difficult. It is. I have had a experience like this with a client, and you know what? We have parted our ways, but I think I miss him because I was liking the challenge. I'm so toxic that I enjoy these She's a challenges. Leo. Yeah, I I'm can a sense Leo. that. She's a Leo. So he must be difficult, I understand, but he was pointing out certain things like people would not pay so much attention to their projects, and that's what I really liked about him. But yes, he did not have professional boundaries. I do need a day off. I do need you to not call me after 9 p.m. Of course. And do they call you after? they call me at 8:30 in the morning also Yeah. sometimes. Really? Yes, Listen, yes. please talk to me. Please talk to me. It's very urgent. Are you a therapist? I think so. I think I'm a therapist also. I should be charging separate in my contract. I'll call Therapist you in and- the morning. I have a lot of issues, I can call you if you're free in the morning. I understand because listen, हमारा काम सुबह शुरू होता है जल्दी, Right. and I respect that. पर हम एक दिन पहले प्लान कर लेते हैं. 8:30 बजे मत कॉल करो. नहीं, ये होता बिकॉज है. हम जोन में नहीं है काम Exactly, करने के. That's exactly. all it is about. बट फिर भी आप कर रहे हो तो रिस्पेक्ट करूंगी. बट कभी ना कभी देयर शुड बी अ ब्रेक टू इट, क्योंकि इफ आई नॉट गेट माई ओन पर्सनल टाइम फॉर माई ओन पर्सनल ग्रोथ, my gym or my whatever I like to do in my personal time, right? Then how would I process the whole day You will with not a be good able to energy? recharge. Yes, your I need energy. that recharge Yeah. energy. Yes. And that's when they start draining and they're just in your space. I I'm agree. also a person, I cannot let anybody come too much in my space. I know, it's very I tough. like my space personally also. Of course, So as you a need designer that time also for I need yourself. You do need Yeah, it. so I'm understanding that you do need therapy, but you also understand I need my time. It should be a two-way communication. You can also call me. Listen, I'm But a मेरी person- एडवाइस तेरे काम की नहीं होगी. मैं किसी को कॉल करने से पहले हमेशा ऐसे पूछती हूँ, हाय डिस्टर्ब तो नहीं किया, कैन वी टॉक? अब तेरे को Because- कौन बोलेगा आगे से कि हाँ किया? मैं तो नहीं बोलूंगी. नहीं, सामने से फिर भी एक पोलाइट तो लगता है ना, उठाते ही फोन किसी को किया, you know, She's a somebody- very- ये कॉल तो वैसे कम ही करती है. हाँ, जब नहीं ये करती करती मैं है तो call. बहुत ही अच्छे से हाय ठीक फ्री है ना, इज इट द राइट टाइम टू टॉक? talk, yes. I तो mean, मुझे ऐसा लगता है कोई मेरा क्लाइंट या कोई कुछ ऐसे मैं कोई ब्रांड एंडोर्समेंट या किसी उसके लिए गई हूँ जिस तरीके से बात करती, तो मुझे लगता है मैं टीचर से बात कर रही हूँ. generally I'm like that. Generally I'm like that. I don't like disturbing people. I'll wait unless and until it's really urgent. So I will call Right. and I will be like, listen. But I'm not. I like have one more question. So being a woman, I'm not saying that you're the first woman in this career. बहुत सारे लोग कर रहे हैं, but आपका साइट रिलेटेड वर्क बहुत ज्यादा होता है. लेबर्स के साथ भी आई थिंक आप इंटरैक्ट करते ही होगे, कभी ना कभी तो करते ही होगे. इज इट डिफरेंट फॉर यू एज अ वुमन? डू यू फील कि आपको कुछ ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू अ मैन, कि सुनते नहीं है, या ऐसी कोई फीलिंग आपको कभी फेस Never. हुई है, या फिर आपको ऐसे लगता है कि नहीं यार इट्स फाइन, यू कोप अप विद इट विद टाइम कि हाँ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन? everything is fine. It's fine. I never felt like that. You never felt like Never that. felt So like you think कि नहीं, it's almost the same for men also. यार मैं जनरली भी बहुत लिबरल हूँ अपने थॉट प्रोसेस में इन लाइफ, तो मैं वो वुमन कार्ड कम ही आता है मेरे दिमाग बट में. इसमें वुमन कार्ड की बात नहीं मतलब है. I will tell you, I have had a personal experience. तो मुझे याद है मेरा ना घर बन रहा था कहीं पे, एंड मैं वहां पे गई और मैंने उनको ऐसे नॉर्मली बोला कि आप ना ऐसे से कर दो. नाउ आई एम ऑल्सो दी, इफ इट्स माई डैड्स हाउस, आई एम ऑल्सो दी ओनर ऑफ द हाउस, एंड दैट पर्सन इज अ इंटीरियर डिजाइनर ओनली. ओके, यू कॉल योर फादर विल टॉक टू देम. और उसने मेरे फेस पे ये चीज बोली है, तो मैंने तो ये चीज फेस की है. लेबर्स को बोलो कि आप ये काम करके अभी, वो जब भैया जी बोलेंगे ना तब हम कर लेंगे. मेरे साथ तो ऐसा पर्सनली विद लेबर हुआ है. नहीं, I'll तो- tell you. हाँ. No, it's not. Maybe it must have been like it must be a confusion. I'm sorry, I'm judging the situation, but I'll tell you what happens is, labor is a very tricky zone to handle, because they're struggling in their life. You have to understand, every day pay and everything. It's a bad situation out there. So they don't want to get confused. So they would want an authority to tell them, finalize and get it done. So they usually like an authoritative person there.
let it be a woman or a man, it doesn't matter. Trust me, Delhi though it doesn't. Maybe, you know, when I work somewhere in Punjab, outskirts, No, or this maybe happened in Delhi only with me. In fact, I feel Bombay में ये सब थोड़ा कम हुआ है मेरे साथ. But मैं नहीं बोल रही हूँ कि दिल्ली या बॉम्बे, but मेरे साथ ये दिल्ली में हुआ था. And back then I was 23, 24 only. And मैं डेली रैड के साथ जा रही थी एंड ऋषि वाज आल्सो देयर. तो आप भैया को बुला दो, जबकि ऋषि इज यंगर टू मी. तो मुझे वो अथॉरिटी का इशू नहीं लगा उस टाइम पे, मुझे वो जेंडर इशू लगा. हो सकता है. बट ठीक है यार, हर बंदा सेम नहीं होता. Hmm. नो शी इज सेइंग उसने नहीं किया फेस, मे बी मुझे ही ऐसा एक बंदा मिल गया, हो सकता है, ये भी हो सकता है. yeah, and also they are not very talkative. They like straight off instructions. Maybe you were हाँ, wanting it to, was you were trying to have a conversation with them like हमारे पास टाइम नहीं है, हमें बता दो करना क्या है. नहीं, Maybe आई like जस्ट that. टोल्ड देम कि इसको पैक करके मतलब इस काम को खत्म करके जाना, यही बात हुई थी. तो सर नहीं, ये वाला नहीं हो सकता, आप उनको बुलाओ. बट जब ऋषि ने मतलब- आके बात की, ऋषि मुझसे छोटा है Then एंड things worked out. he was like ठीक है हम कर देंगे. उसने एक चू भी नहीं बोला. एंड मेरे को उस टाइम पे ऐसा लगा कि यार ये लेबरर्स को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल है. पता नहीं इनके, मेरे को ऐसा लगा कि उन चारों के दिमाग में तो यही था कि आप उनको बुलाओ. तो वो वाली फीलिंग मुझे पर्सनली आई थी. Hmm. बट मे बी But हो सकता है maybe, see, there are all kind of people, you know. Exactly, तो and मुझे- with all kind of Hmm. education background. So right now, maybe what I'm dealing That's with are, there's a layer. So I Hmm. have a supervisor, then I do have my partner taking care of. So See, I have a layer of authority that has been said. Okay, so moving forward, Vidushi, जैसे you are into lifestyle designing, and I have heard जब लोग घर बनाते हैं तो they believe in वास्तु a lot. Yeah. वास्तु में बहुत ज़्यादा believe करते हैं वो. So what is your take on वास्तु? Are you pro it, or do you follow it, or you don't? Let me try to break it Yeah. up in Hmm. this way. So you know we are one of the oldest civilization, right? And our ancestor used to believe in 5 elements, Hmm. pray to 5 elements, Yeah. and that's how everything was coming across. So they understood the climatology, the environment very well. And how I see it is that, for example, these are people who believe in Vastu would understand. Northeast is going to be the coolest zone, and South is going to be the hottest zone. Okay. It's just a science, right? Because sun rises in east and sets in west, right? So और movement south के through होता है. Hmm. तो वास्तु भी हमें वही बता रहा है. Okay. Standard climatology मैं पढ़ाती भी हूँ, मैंने पढ़ी भी है अपने you know college में. It's gonna tell you exactly that. Okay. And people are gonna layer it with superstition, वो करें. But I still believe Vastu is very practical, and when you follow certain you know logics of Vastu, you make a beautiful livable house, and that should be the final goal. A livable, nice, sustainable house. And for that, if Vastu is an aid, I feel like yes, why not? I never try to you know give superstition to my clients कि करना है. If you believe in it, okay. If you don't believe in it, फिर भी जब मैं लेआउट प्लान कर रही हूँ तो मैं कोशिश ये करती हूँ करने की कि I do try to follow certain facts so that positions of the stuff, the climatology, the sun path is followed, so that the layout is a good layout. Is a sustainable layout. So they follow. I believe in it. If they come with me to a request ki we want to use shades of pink, I was like, okay, shades of pink. I never detest that. So after working with Vastu experts for such a long time, have you got any ideas about like what are they doing? Like, do you put that in your work also? While working as an interior designer, do you put Vastu? Because I've designed houses of people who are Vastu consultant, and I've been dealing with them. Yeah. So thankfully उन लोगों ने मुझे बहुत सिखाया है, तो मैं Yes. follow करती हूँ. हाँ, Okay. मैं खुद follow करती हूँ. मैं नहीं डालूंगी किसी का किचन नॉर्थ ईस्ट में या टॉयलेट, बिकॉज ये बेसिक है, उन्होंने सिखाया है. और मैं अगर मुझे लग रहा है कि मेरे को अब कोई सच समझ नहीं आ रहा है, आप वास्तु में फॉलो करते हो, तो मैं ये भी नहीं बोलती मुझे वास्तु आता है. आई जस्ट बिलीव दैट आई एम अ बिलीवर ऑफ इट. यू हायर a professional for it. Yes. I do not know everything. Exactly. Because that's not my forte. I'm Right. not a master of all. Yes. पर आपका ऐसे कभी क्लैश हुआ है कि आपने कोई डिजाइन किया हो एंड बिकॉज ऑफ वास्तु आपको पूरा ही चेंज करना पड़े, ऐसा कुछ हुआ है कभी? हाँ, हमारी पर्सनल साइट्स पे ही हुआ है, तो that's fine. I mean, we try to modify as the need comes. So We try to negotiate. We tell them that what if we don't do it? What are the complications? Is there a certain remedy? If not, what could be done? Then we try to come to one level, and then yeah. Can you tell us one of the experiences or any of the examples that you have in your mind related to anything related to Vastu? Yeah, मैं believer ऐसे बनी
कि मुझे हर टाइप के लोग मिलते हैं, न्यू क्लाइंट्स मिलते हैं बार बार, हम्म। तो मैं ना बार बार जो बेसिक्स मैंने सीखे वास्तु के, कुछ स्टैंडर्ड, वो मैं ऑब्जर्व करना शुरू हो गई. तो सर्टेन जोन्स विल गिव यू रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज, दिस एंड दैट, और मैं कंपास खोल के देखना शुरू हो गई. एंड यू नो व्हाट, lot of times it is true. Lot of times it is true. And I will not say 100% for sure, because बहुत सारी चीजें होती है आजकल, एनर्जी है, and there are more things coming in. I'm not ऐसे gonna- 2-3 आपको कोई जेनेरिक चीजें पता है कि कौन सी डायरेक्शन में क्या नहीं होना चाहिए, जो जेनेरिक चीजें जो आप नहीं, मैं नहीं बोलूंगी, बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है. आई एम नॉट गोना बी. नो, बट जैसे आपने बोला कि मैं You can cut साउथ क्या नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में कभी नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं दूंगी. Kitchen इट्स नहीं द प्योरेस्ट जोन, इट्स अ मंदिर का एरिया. Okay. दैट्स वन थिंग, Okay, दैट्स जस्ट okay. वन थिंग, वो जो मुझे दिखता है. बट डू यू थिंक कि जैसे आप जब ये डिजाइन करते हो तो वास्तु की वजह से आपकी जो क्रिएटिविटी है वो लिमिट हो जाती है? डू यू थिंक? नहीं, क्रिएटिविटी हमेशा चैलेंज से और इनहांस होती है. ओके. अगर हमें पता है यहीं पे डाल देते हैं दरवाजा, यहीं पे डाल देते हैं अलमारी, एंड स्टैंडर्ड से चलते रहेंगे तो नया डिजाइन तो बनेगा ही नहीं. तो चैलेंज इज ऑलवेज गुड. ब्रिंग इट ऑन. आप कह रहे हो पिंक को लग्जूरियस बनाना है, तो ब्रिंग इट ऑन. दैट इज हाउ इट शुड बी. अ डिजाइन शुड नॉट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि यही करना है. It should be challenging. And I think that's your work. Yeah, as creative as you I can. know. I mean, अगर हर किसी का पता ही चल गया बेज हाँ, डालना है तो और कोई फिर कलर डाला ही नहीं, monotonous तो है. कैसे पता चलेगा कि ये खुशी का घर है या भाविका का घर है? Like you need to have I agree. personalization. You That's need true. to have a personality. People are just walking in, walking behind. ये ट्रेंड कर रहा है तो कर लो. नहीं, आप बहुत सारे ट्रेंड कर रहे हैं अब. बहुत सारी थीम्स, कोई क्लासिकल कर रहा है, कोई मिनिमल कर रहा है, कोई काइंड ऑफ जापानी कर रहा है, different kind of themes. So you just follow what you like and develop on it. Have you ever rejected a client कि नहीं, मेरे को नहीं समझ आ रहा है या मेरे से नहीं हो पा रहा है? कभी ऐसा हुआ है? हाँ. On the basis of what? Basis of behavior or on the basis of what they're asking आप वो deliver नहीं कर Lot पा of रहे? times commercials की वजह से कि कम कर दो, हाँ. पैसे कम कर दो यार. With the experience as you grow, you cannot do that. Sadly, I feel like सबके बजट के लिए सब कोई available है. Exactly. But as I'm growing, मेरा experience बढ़ा है और मेरे अपने experiential expenses हैं. I need to make up to them. That's true. I need to have that level of quality of employees for myself. So it's non-negotiable. What I need to charge is what I need to charge. We can definitely sit on the table and discuss, but that doesn't mean I'm going to come down to what you're requesting. So it's usually because of the commercials. One of the reason, and sometimes it's also that they're very disrespectful. Yes, that's what I was asking you, because people can touch your nerves sometimes. know. It happens. In my Yeah. profession also it happens. Yeah, micromanaging, disrespectful. आपने क्या बताया? ये तो हमें पता था. नहीं, people think that अब तो तुमको खरीद ही लिया है. Simple. खरीद हाँ. लिया. ये mentality होती है, पता है? And My that's in sister India sat only. with me and told me people are emotional when they're designing their houses, हाँ. and I respect that. हाँ. ठीक है, but respect two way होता है ना. Respect is not a one way I know direction. It's like you have to respect me, then I I respect agree. you back. Personally also, that with some brands that I've worked with, of course I can't name them, but they're not very respectful towards creators. तो मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पे सब्जी खरीदने नहीं आए हो. इट्स अ टैलेंट. हम कुछ आपको ऑफर कर रहे हैं, प्रोफेशनल स्किल्स है. अगर इतना ही होता तो आप कर लेते, खुद कर लेते. अगर आप इतना, ये वाली बात मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी कि इसने बोला माइक्रो मैनेज. कुछ तो आप वो दोगे ना, क्रिएटिव फ्रीडम दोगे क्रिएटर को. correct, एग्जैक्टली. correct. तो वैसे आपको भी हल्का सा क्रिएटिव फ्रीडम So now when I'm doing some content creation, brands would call me and they'll be like, "Ki, we want this." I said, "एक second, मैं अपना content एकदम अपने मन से जो मेरा मन होता है वो बनाती हूँ. ठीक है, और मुझे लगेगा लॉजिकल तो बनाऊंगी ना. मैं आपका ब्रांड एंडोर्समेंट कर रही हूँ. मेरे को वो चीज़ यूज़ करनी है, वो यूज़फुल है या नहीं. जो लोग देख रहे हैं वो 30 सेकंड्स भी दे रहे हैं, उनको कुछ सेंस बन रहा है उस बात का. विल इट एड टू देयर नॉलेज या फिर इट्स गोना बी ब्रेन रॉट फॉर देम. If it's gonna be valuable, then I'm gonna do it. And you cannot expect कि अब भी स्टोरी डालो, ऐसे करो. वो मैं नहीं कर सकती. कैटेगरी नहीं है मेरा कि मेरे को कोई माइक्रो मैनेज करे. I am not like that person. Exactly. मेरे साथ ऐसा हुआ है काफी बार, like on my workplace also, that कितनी बार ऐसे ब्रांड डील्स हुई हैं whereby आपका ये टोन नहीं समझ आ रहा, आपने हिंदी में वर्ड क्यों बोला, फिर आपने मुझे हायर क्यों किया अपने ब्रांड के लिए, आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी, आपने मेरा काम नहीं देखा है. तो आप पहले ही बता दो ना. वंस यू शूट इट, एंड यू नो जो छोटे क्रिएटर्स होते हैं उनकी रिस्पेक्ट तो वैसी, व्हेन यू आर इन अ जूनियर लेवल तो वैसे ही बहुत कम करते. दे रियली लुक
मतलब they don't greet you with that kind of respect. मैंने बहुत बार ऐसे देखा, ऐसा होता है क्रिएटर्स के साथ, बट विद टाइम विद एक्सपीरियंस आई थिंक वो चीज़ अब बेटर टैकल हो जाती है, तो आपको That's समझ true. भी आ जाता है दैट आप कैसे जवाब दो, आप कैसे करो. Now Just you a become- quick take, keep everything very professional. Like हाँ. download लेने के बाद सब कुछ बहुत professional Exactly. contract पे भेजो, and I Exactly. think that works with everyone. Exactly. And you're right यार, मतलब why did you hire her if you हाँ. do not, मतलब you have to give her a creative freedom, क्योंकि उसकी audience को कुछ certain चीजें पसंद आ रही है, इसलिए वो ऐसे कर रही है. तो एक respect तो दो, give your open heart to whosoever you have hired. Exactly. But people do have issue with कि हमें See, बताए. I understand. That's a brand. अब आपका कोई क्लाइंट होगा, उनका भी उनको एक पर्सनल चीज चाहिए तो चाहिए, वो उन्होंने बोला है कि मुझे पर्सनली चाहिए, बट there's a level ना. आप अगर आपको भी हायर किया तो कुछ तो विदुषी का टच होगा ना, तभी तो विदुषी को हायर किया कि विदुषी का काम अच्छा होगा. हाँ. चाहते तो किसी और को भी कर सकते थे. Correct. तो ये विदुषी से मैं विदुषी वाली चीज ही एक्सपेक्ट करूंगी. Exactly. तो वो वही है. ऑल्सो आई हैव वन मोर क्वेश्चन फॉर यू. आप इतना टाइम क्लाइंट्स के साथ काम करते हो, आई थिंक एक साइड पे एटलीस्ट 6 महीना तो लग ही जाता होगा या ज्यादा टाइम लगता होगा? हम बड़े एफिशिएंट हैं, मैं मार्केटिंग करती हूँ हाँ, अभी. हाँ. हम अभी we were at a site, I was out of हाँ, topic है. yeah. We were at a site and हमने वो खत्म कर ली 6 months में Right. at a cost which is I can't disclose it, but half of the other person जो सामने वाले फ्लैट में रह रहे थे, Okay. they took 1 year double the cost. And I was like, मेरा क्लाइंट अभी भी खुश क्यों नहीं था? क्योंकि मैंने उसे बताया नहीं कि लोग ऐसे लूट रहे हैं. That's what the thing is. And we were really efficient in our timeline and everything. But I think sometimes overcommit भी हो जाता है, लोगों को realize नहीं होता है कि इतनी जल्दी कर रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि कल ही हो जाएगा, टाइम लगता है. तो yeah, I mean, yeah, we are very efficient. So do you get attached to these clients because आप इतना ज़्यादा हमेशा, टाइम काम हमेशा, करते हो, तो आपका एक हमेशा. bond I'm a कुछ- very emotional person. I love my work. I've always been attached to any site I'm doing, and that's what makes it beautiful, I feel. But again, every time a different heartbreak or whatever it goes through, I know when to detach also. I need to be attached to my client or my site so that I do my best. You cannot do something that you're distant and good. True, You know, you true. cannot do some good work when you're not emotionally attached to Right. that thing. But detachment भी आना चाहिए. So I try to do that. कभी कभी wobble होता है, कभी कभी smooth road होता है. तो how it happens? I am attached. I know. Okay, so let's address the elephant in the room. Do you think that some interior designers, I'm not talking about you, other interior designers that you know, they're overhyped and overpriced? Some of them, do you think आपके मन में है नहीं ऐसा यार, कुछ? सब लोगों ने मेहनत करी है. They have reached there. अगर कोई 7 लाख का सोफा दे रहा है तो कोई खरीद भी तो रहा है ना. बिल्कुल. तो क्यों खरीद रहा है? उसने ब्रांडिंग में मेहनत करी होगी, उसने पोजीशनिंग पे मेहनत करी होगी, उसने अपने काम की क्वालिटी पे मेहनत करी होगी, कुछ तो किया होगा ना. खरीद तो कोई रहा है ना. तो ओवर प्राइस ऐसा कुछ नहीं है. तुम पहुंचना चाह रहे हो, सब एलवी बन रहे हैं, तो इट्स ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. नोबडी इज ओवर. हाँ, आपको ऐसा लग रहा है कि वो बट इनएफिशिएंट बहुत सारे लोग हो जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा. That's what I'm asking, कि बहुत सारे लोग, आपको लगता है ऐसा भी होता है क्या इस लाइन ऑफ वर्क में कि काम इतना बोलता नहीं है, बट दे चार्ज अ लॉट, दे आर वेरी ओवरप्राइस्ड? आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होता है? पोजिशनिंग हो गई, हाँ, करते हैं कभी कभी. दे हैव नॉट डन टू मच. पर उनके भी ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जो बहुत बैंगर प्रोजेक्ट्स होंगे, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जिसमें ध्यान नहीं दे रहे होंगे. सब डिजाइनर्स के साथ ऐसे हो रहा है. तो क्योंकि जैसे जैसे वो ग्रो करने लगते हैं एंड देन दे लाइक कि जूनियर्स विल हैंडल इट, बट वो वहां तक पहुंचे इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने कुछ बहुत अच्छे काम किए हैं. दैट इज व्हाट आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन एंड आई ऑलवेज फील लाइक कि कभी भी किसी से भी मिलो तो कुछ तो अच्छा कर रहा होगा, वो ले लो. बुरे से क्या मिलने वाला है? मेरे को कुछ नहीं मिलेगा वो करके. सो आई फील लाइक व्हाई आर दे सेलिंग दिस फॉर दिस मच मनी? ये तो इतने का है नहीं. That's fine, but they are able to sell. There's a reason. So हर प्रोजेक्ट बढ़िया नहीं होता. कहीं कहीं मुझे लगता है यार मैं करती तो बढ़िया करती. Of course होता है वो, but it's a situation based. It's not कि वो डिजाइनर बेस्ड है, कि वो डिजाइनर ही ओवरचार्ज कर रहे हैं या वो है ही खराब. It's a situation कि यहाँ पे ये वाला ज्यादा सेट होता. अब यार somebody was talking to me yesterday, very interesting conversation. कि somebody wears a branded shirt and he doesn't put a logo.
but he goes to a brand and buys it, an expensive European brand and buy it, Hmm. because you know what does he do? Because वो private jet चलाता है, तो वो कहाँ जाएगा? वो उसकी जगह ही है वहाँ जाने के लिए. तो हर टाइप के डिजाइनर्स के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, या किसी भी बंदे के लिए हर टाइप का एक क्लाइंटेल है ना. You're growing and you're stepping. तो वैसे ही वो लोग उन्हीं लोगों के लिए काम करेंगे जो उतने का ही चीज मिनिमम खरीदना चाहते हैं. True. So Vidushi, we are now entering a very fun segment. You see that side table? Yes. Yes. So at this moment, you could change, add, remove anything on this side table. What would it be? Okay. Very nice. So basically styling a Yeah. side table. Yes, you have to style this. Form side table. follows function. सबसे पहले एक coaster. Okay. Then maybe 2 books Okay. that maybe depicts what Ballmates is about. I Yeah. would add those 2 books here. Mhm. Led with a nice scented candle. खुशबू आनी चाहिए. हाँ, हम that's बैठे very हैं यहाँ पर important. अच्छी You have सी. to smell good. Fragrance अच्छी होनी चाहिए तो हाँ. अच्छा लगता है. Mood हाँ. refreshed होता है. And energetic candle डालेंगे जिससे बोल पाएं, बहुत ज्यादा बातें कर पाएं. Right. Or then we can add a art piece again that depicts Ballmates. Maybe we can get like a 3D printed Ballmates art piece. That'll be nice. I would add a vase. I'll take this out so that he can do what he has to do with the editing. So we'll add a vase to add some color because Okay. बहुत bland हो रहा है. Mhm. उसके साथ हम मे भी छोटा एक और वास डाल देते हैं to add one more layer of color. I love layering. बहुत सारा layer होना चाहिए, बहुत सारा thought होना चाहिए. And then I would add a accent light lamp. तारा आंटी तो जॉब भी छोड़ देंगी इतना सामान देके. डस्टिंग कौन करेगा? People like कि डस्टिंग कौन करेगा? ये क्या लाई है तू? मैं तो छोड़ रही हूँ तेरा काम. Sorry. But really nice. बहुत बहुत अच्छा है यार. That's so हाँ. good. I think Vidushi, you'll have to come to my place and you'll have to design that space. Of course. Really. अब मुझे ऐसे feel हो रहा है. Why is she even asking me who else will do it? Exactly. अब मुझे ऐसा feel हो रहा है कि my place is missing something. अब मुझे ऐसा लग रहा है. and she नहीं could नहीं add यार, an- आई थिंक तेरे में बहुत ज्यादा लेयरिंग नहीं करेंगी. इसको तो ओसीडी है. ये तो पागल हो जाएगी साफ करते करते. वो जगह वहां होनी चाहिए थी, वो चीज यहाँ होनी चाहिए हाँ, तभी थी. से चीजें बोल ही रहा था. हाँ, इट्स लाइक कि एक सेकंड इसको उसी एंगल पे दोबारा कैसे रखूंगी मैं. नहीं, but I think इसके we भी कम कर लगाएंगे बिकॉज हर तारा पर्सनलाइजेशन. आंटी ने से भी दिए हैं ना कुछ कुछ गुण. No, but I think इसको जैसे बताओ, she does it very well. I have seen a few sites because मैं इसके साथ added भी हूँ Instagram पे, and her work, it's phenomenal. Speaks for itself. It's really good. Thank you. अच्छे से बोलो. थैंक यू. Okay, Vidushi, so tell us ऐसे कोई नए trends जो है जो हम common man को नहीं पता, like we don't know about it, we are unaware about it. तो ऐसी कोई चीजें हैं? Yeah, there are few. So I'm blessed to be traveling so much and seeing all these exhibitions and also being exposed to so much of Yeah. new things that is happening in interior design world. So there are few trends, few technologies that I'm looking forward to be using. One is there are now solar panels that are coming that you put in the facade vertically. So you can make your, rather than tile marble lagate the facade pe, we can just clad solar panels. Right. How efficient is that? There's new technology. One of my client introduced it to me. Solar winds. The Okay. wind panels. So they produce electricity. That's Okay. also very interesting. I'm looking forward to use. It's old. Solar geysers. These are old, but I still feel कि होना चाहिए. Right. But still many people are not using it. Yes. And lot about solar हो गया. Then there are these cool taps. जिससे carbonated water भी निकलता है. Iced, chilled, Right. hot, So carbonated. nice. That's a very cool interesting. ad. Yeah. And one thing I'm eyeing for is built-in coffee unit. Oh, I would love Wow. that. I would love I'm not a that. coffee person, but is there tea unit? I would like that. I designed a house and I did a tea station. So there were Wow, teas from all over the world. We did like a nice station with a tea kettle and a burner and everything. It was just a tea I station. would love to see that. Do you have a picture of that? I will send it across. Yes. Please, yeah. I I'll would send you love the drawing. that. It's still getting made. I'll send you the spec Because drawing. You people can are post. people, they have these coffee stations. वहाँ पे घर में होते हैं छोटे छोटे spots. They make it, but for tea, I've never seen that. So that's something really different. Maybe we can put this in this video also. Yes, Yes, please yeah. share if the client allows. Yeah, I'll please just send do. you just the drawing of it. Okay. Definitely. Done. Done. Yeah, it's pretty cool. Okay, guys. So we are about to end this podcast. And Vidushi, do you have something to say?
Yes, it was lovely chatting with you girls today. It was a great time. I do not know how to end a good conversation like this. You can end it by actually telling about your business, the Yes. name of your page. So my studio's name is Studio Design Mischief. I would love for you guys to go check out my page, give it a follow, see what you like, what you do not like. I love to interact, and yeah, I mean, give more patience to your anybody who you have hired. Judge before, trust later, and be patient. Rome was not built in a day, and trust the process. I think interiors is about making beautiful spaces also. Yeah, so that's a beautiful job that we do, and I enjoy doing it, and I hope you like watching, talking about it too. Well said. Yeah. On that note, I think we'll end our podcast now. I hope you like our podcast. Please, guys, like, subscribe, and share. Share. Why aren't you subscribing, guys? Yeah. Please do it. Nobody is Do it. subscribing. We love you all. Bye.